Yeah, good afternoon, friends. Welcome to the session, and a warm welcome to you all. काफी दिन के बाद हम मिल रहे हैं. I think close to a month. So you had a great time in learning, understanding, and executing the algo trades with our in-house algo expert, Mr. Nagaraju. So welcome back. If my audio is loud and clear, give me a thumbs up sign. और समय आज कैमरा में कुछ इशू है, so you'll not be able to see my face, but that's fine. What's important is the understanding. So I'll just set the chat window and the question window. Done. So let's start. So today's session is about, आज का जो session है options के बारे में, और options में आज हम समझने वाले आयरन कॉन्डोर और बैटमैन स्ट्रेटेजी. So before I start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. And another thing, एक चीज और हम, this is about me. My name is Hitesh Chotalia, and now I think you all know me. We are regularly connected. I have close to 26 years of experience in the markets. आज का webinar में we'll understand two strategies in detail: Iron Condor and Batman. So in these two strategies, when to use Iron Condor versus Batman, strategy construction and payoff understanding. सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ऑप्शंस में क्या है, स्ट्रैटेजी जानना जरूरी नहीं है. ठीक है, स्ट्रैटेजी तो हमें समझना है, उसके बेसिस पे हम एग्जीक्यूट करेंगे. बट व्हाट वी नीड टू नो इज अबाउट कौन से मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए. तो आज का जो स्ट्रैटेजीज है आयरन कॉन्डोर और बैटमैन, ये दोनों स्ट्रैटेजीज आप साइडवेज मार्केट में करते हो. आपको पता है कि मार्केट यहां से 300 पॉइंट के रेंज में अंदर में क्लोजिंग हो रहा, बीच में इंट्रा वीक ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है. तो वहां पे जाके हम आयरन कॉन्डोर और बैटमैन कर सकते हैं, विच इज कंडीशंस इन अ साइडवेज मार्केट. सो आयरन कॉन्डोर एंड बैटमैन आर स्ट्रेटजीज टू बी डन नॉट इन अ ट्रेंडिंग मार्केट बट इन अ साइडवेज मार्केट. राइट नाउ अगर आप देखो तो मार्केट इज स्टक इन अ रेंज एंड अ बैंड. हर एक एक्सपायरी एक रेंज के बीच में होती है. सो दीज टू स्ट्रेटजीज आर गुड गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस, और नॉट करंट, आई वुड से sideways. And what is the risk and reward? What is the break-even analysis? How to construct it? Common mistakes. देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी, इसको क्रेडिट स्प्रेड्स बोलते हैं. क्रेडिट स्प्रेड का मतलब है कि आप प्रीमियम बेच रहे हो ज्यादा और हेज कर रहे हो कम. So that means if prices don't close above or below your level, you get the entire net credit. So these are part of what we call credit strategies. आप प्रीमियम ज्यादा बेच रहे हो. So first let's understand iron condor. सबसे पहले आपको प्राइस चार्ट्स देखना. यू हैव टू सी द प्राइस चार्ट्स. आई विल गो टू माय प्लेटफॉर्म व्हिच इज स्टॉको इनक्रेड मनी, एंड आई विल जस्ट गो टू द प्राइस चार्ट ऑफ, let's say Sensex has expired today. So whenever you are doing credit strategy, make sure you get the maximum theta benefits. So today was a great day to do it. So let's understand. I'll go, you can do in any Sensex and Nifty. I would prefer credit spreads. In context of weekly expiry, you can do monthly also. See, first of all, आपको अगर weekly charts देखो, fine. So what happened this entire week? What was based on previous close? Let's say this closed here, and market closed where? Can you see this? Market closed just the Sensex closed just 1300 points above. This week also expiry to expiry was flat. Had you bought any call option or put option, you wouldn't have made money. So किसने पैसा कमाया? Credit spread traders ने पैसा कमाया. So I'll just zoom this chart and I'll open in the entire platform. पहले जिसका background है हमें charts पे करना है. So now first thing, know the weekly range. हमें week की एक range रहती है markets की. वो हम कैसे जानेंगे? How will come to know that? So first you change the time frame to weekly. And in weekly, go to indicators, go to average true range. This is the ATR of weekly, which is average true range. So currently, the ATR of Sensex is showing 2315. 2315 पॉइंट का गड़बड़ एक हफ्ते में हो सकता है Sensex में. Last week, what was the ATR showing?
लास्ट वीक एटीआर दिखा रहा था 2327, and if you see based on this thing, Sensex went up how much? 1000 point, went down how much? 600 point, close flat. So now are you getting it, everybody? Week on week, if you see, prices are moving as per ATR. Here let's say ATR was very high. I'll come over here, this part. It was 2315, fine. मार्केट बंद यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग कितना हुआ? ये 4000 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया. तो जब इस तरह का ट्रेंडिंग मूव आता है, so that's the time where such strategies are tend to lose you some money, but then you go for adjustment, you can go for shifting, which is for the topic we'll discuss बाद में. मोर और लेस देखिए, बॉटम पे हम रेंज बाउंड नहीं कर सकते. एक बार हमें इंडिकेशन मिला रेंज बाउंड का, तभी हम रेंज बाउंड कर सकते हैं. सो राइट नाउ वंस वी हैड दिस हाई इन प्लेस, एक बार हमें ये हाई देखा, एंड देन वी हैड दिस लो इन प्लेस, और ये लो. तो एक पता चला गया कि मार्केट का एक रेंज है. सो लेट मी मार्क दिस रेंज. सो दिस रेंज इफ आई टेक इज हाउ मच? ये पूरा रेंज है मार्केट का. If I see in points term, this is a 7,500 points range. But एक हफ्ते में तो high end of the range and low end the range 7,000 points आता नहीं ना. 10% move you don't have in the markets. Right. So, but overall, if you see the direction of the price, they are stuck in the range. Week on week, they are giving a movement which is less than 3,000 points on a closing basis. Got it? So now, दिस इज द वीकली एटीआर ऑफ सेंसेक्स. अगर आपको देखना निफ्टी में, सो दिस इज द वीकली एटीआर ऑफ निफ्टी. एटीआर हमें जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज एटीआर इज अ मेजर ऑफ वोलेटिलिटी. अगर वीकली का एटीआर कोई पर्टिकुलर लेवल्स दिखाता है, तो दैट मींस बेस्ड ऑन फ्राइडेज क्लोजिंग एक हफ्ते में मार्केट इतना ऊपर जा सकता है और इतना नीचे जा सकता है. So just give me a minute. My trading view is hanged. Yeah, it's back. So अभी मैं निफ्टी का प्राइस चार्ट खोलता हूँ. So this is the price chart of Nifty. Where Nifty is on a weekly. I have changed it to weekly. अभी निफ्टी का भी आप वीकली एटीआर देख लो, because ATR is your key study. Daily average true range. So I have my ATR on the weekly. Weekly में निफ्टी का ATR कितना दिखा रहा है everybody? Is it 689? Give me yes or a no. Yeah, give me a yes or a no, friends. Yes. So that means in a week, market can move 1700 points. Sorry, 700 points on the upside, 700 points on the downside based on the ATR. So you know the range. तो इस तरह से आपको एक रेंज का इंडिकेशन हमें ATR से आता है. प्लस वीकली स्ट्रैडल प्राइस से भी आपको रेंज का पता चल सकता है. ओके, नो. सो आई एम कमिंग बैक टू सेंसेक्स, बिकॉज सेंसेक्स में देखिए आज ही एक्सपायरी हुई है, तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए 3 दिन का आपको थीटा भी था. So we'll do the practically over that, but the calculations are same from where to fix out the range. So this is Sensex. So Sensex में what it is showing me is the weekly ATR of Sensex is 2323, and Sensex has closed this expiry which is Thursday. अभी next expiry Thursday हो गई, 7 दिन. तो देखिए, अगर आप क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजीज करते हो ना, तो मेक श्योर यू इनिशिएट सच स्ट्रेटजीज ऑन द वेरी फर्स्ट. मान लीजिए सेंसेक्स का आज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे, बट यू हैव टू डू टेक पोजीशंस on the last day of the expiry of that series, but your trade is on the next week expiry. Everybody give me a yes. Yeah, I want yes from you all. Okay. So now this is Sensex. Right? Today Sensex has closed 3 बजे आपको ये trade. So 3 o'clock is the trade initiation time. So it is 2323. So I take 2323 from here.
So let's take a round figure which is 23,400. Fine. Okay, so I'll drop a line over here कि वो कौन सी स्ट्राइक है हमें देखना है, और नीचे में भी 2-3 करीब करीब यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस लेवल, more or less. Yeah, I don't want to fine tune more. Done. So I'll drop a line over here. So now can you see you have got two levels in which the probability is high कि market उसके बीच में next week बंद हो सकता था. Everybody clear? Had you done this last week? देखिए ये वीकली है. लास्ट वीक में आप किया था, मार्केट यहीं बंद हो गया, तो आपने जो भी प्रीमियम बेचा था, द एंटायर नेट क्रेडिट केम टू योर अकाउंट. सो आयरन कॉन्डोर में हम करते क्या है, एटीआर जितना है, आज का करीब क्लोजिंग आ रहा था 76,900 विच इज 77,000. सो 77,000, 78, 79,300 लेट्स से एक अपर का लेवल है, and on the downside it will be how much? 77,100 minus 2300. So 77,100 minus 2300. So on the downside it's 74,800. So it's coming to 74,800. See, everybody says you don't need any levels to do this. No, I'm a firm believer. Open a price chart and see where the range is. Getting it? Rather than arbitrarily taking 2000 points, 3000 points. एक बार चार्ट के हिसाब से लो ना, जब सामने चार्ट फ्री में आपको मिल रहा है, तो why don't you do that and say नहीं मैं चार्ट्स नहीं देखता हूँ, मुझे लेवल्स नहीं चाहिए. No, watch it. अगर एक कोई भी चीज देखने से हमें फायदा हो रहा तो देख लेते हैं. Right? अभी आयरन कॉन्डोर का मतलब क्या है? आयरन कॉन्डोर का मतलब है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ये रेंज में बंद होगा. फाइन. तो नाउ आई विल रिमूव दिस. ओके, सो 79,300 एंड दिस. तो इसके बीच का प्रीमियम अगर आपने बेचा होगा तो इट ऑल कम्स टू यू. अभी कंस्ट्रक्शन देख लेते आयरन कॉन्डोर का. आयरन कॉन्डोर में कंस्ट्रक्शन क्या है? सेल ओटीएम 8 कॉल्स. ओटीएम का मतलब वही है जो हमने जो हिसाब से लेवल निकाला वो हिसाब से बेचना है. तो आप जो बेच रहे हो उसका प्रीमियम ज्यादा है और उसके ऊपर का जो आप बाय कर रहे हो उसका प्रीमियम कम है. सो फॉर एग्जांपल इसमें आप कॉल पुट दोनों बेच दे रहे हो. मान लीजिए 79,300 है, ये एक्सट्रीम है, तो ये मेरा हेज है, तो ये मैंने कॉल बाय कर लिया. एवरीबडी क्लियर? और लॉट साइज सेम रखना है सब में. गिव मी अ यस एवरीबडी. तो ये मेरा हेज है एक्सट्रीम पे. अगर इसके ऊपर गया देन आई माइट, if it closes much beyond that I might see some losses which will come to know how to see it. और ये मेरा hedge है, so I will buy PE which is 74,800. everybody clear how to set it up? कभी भी मत कर लो इसका हर एक. देखिए क्रेडिट स्प्रेड्स में आपको थीटा खाना है और टाइम वैल्यू डीके खाना. अगर टाइम वैल्यू डीके खाना है तो फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द बेस्ट डे टू डू द ट्रेड. आज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो आप देखो 3 बजे के बाद नेक्स्ट वीक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उसमें बहुत एक्टिविटी बढ़ जाती है. सो दीज आर माय हेजेस. राइट. अभी आपको और एक चीज करनी है विच इज ये फुल रेंज है, इसकी 20% लेनी है. तो हाउ टू टेक 20%? जस्ट गो टू दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इसके सेटिंग्स में आपको 80-20 डाल देना. 0.80 और 0.20. एवरीबडी गॉट इट?
1 second. 0.8 0 1 2 3 4. Why my this part is not coming? Okay, 0.20. Everybody clear? So we are taking the top. So this way we have created a boundaries. So this one and this one. This is very conservative approach, but let's see in terms of how it works. So this level is what? 75,777. So it's 75,800 जो कि 1000 point ऊपर है. So I am selling 75,800 put. Everybody clear? From where I got this figure, 75,800? Either give me a yes or a no. Yeah. And this level is 78,800. So I'm taking equidistance. See, you can look for exact differences out there. कि दोनों का आप मैच करा दो. This is for educational and informational purposes only. So यहाँ पे I am selling CE 75,800. Now everybody got it? So, sorry, not 75, 78. Sorry. So what you are doing is, या तो closing से आप equidistance ले लो. So if this is from the closing 75.8, so accordingly you take the upper strike. Everybody got it? So this is what we call the bear call spread. You are selling and you are adjusting. Right? And you are selling a put and taking a hedge जो कि नीचे का हम put खरीद रहे. This is a bull put spread. So when you combine the bull call spread plus the bull put spread, the strategy becomes iron condor. Now you got it. What is an iron condor? It's a combination of two strategies. Give me a yes, everybody, if you have understood it. Yeah, I want yes from you all. So this is what you call an iron condor, right? So now let me go and put the ये सारे जो रहते हैं वो मैं डाल देता हूँ अब मेरे Insta Options platform पे to see the payoff graph, the risk profile and everything. What about monthly expiry? You can do Ravi in monthly also. Fine. If I'm taking a theta decay, I will always prefer a weekly expiry in context to monthly. See, fine. So now I go to strategy. Okay. So here I select Sensex. I'll add, we need 4 legs, right? 2 is for call and 2 is for put. First is a sell, second is a buy, which is a hedge. First is a sell and second is a buy hedge. So now you got it. So now let's put in the strike prices the way we had seen right now. अगर strike price इसमें डाल रहे तो 78,800, 78,800, and the hedge over here is 79,300. This is how you use it in stock or incred money Insta Options. 79,300. Got it? So आज का तो expiry हो गई. So we'll have to take the expiry which is 2nd July. Right? So now you see the premium which you are selling is 87 rupees. Got it? And the premium which you are buying is 49 rupees. Net credit means 87 minus 49. If prices closes below 78,800,
you will make 87 rupees on the upside and you lose 49. Got it? The working part of it, everybody? Same way, let's go on the downside. The put which we are selling is 75,800. Give me a yes or a no. Yeah, I'll wait for your yes or a no. Yeah. And again, the put which I am buying is 74,800. 74,800. So now, again, I'll select the next week expiry. Yeah. So now you are selling a premium which is 90 rupees and you are hedging with a buy on a premium which is 20 rupees. So this is called a net credit, which means on the call side and the put side. What does it mean, a net credit? Fine. Net credit means the premium which you have sold is your net credit, which means you'll receive that amount, provided market closes below those levels. So your net credit, so your credit over here is not net credit, only credit. 87 plus 90 equals to how much? If anybody has, give me a number, or I'm horrible at maths. I'll have to use my calculator. So it's 87 plus 90 equals to 177. Okay. So 177 is my credit, and the hedge leg, I'm paying money, I'm buying, which is 49 plus 30, 29.90. Yeah, here I don't need calculator. This is 79. So what is my net credit in this strategy? Net credit is equals to 177 minus 79 equals to 98. Got it, everybody? Clear? Now, what do you mean by net credit and from where we got it? Just see, look at the numbers on the left. Ravi R says credit spreads are in the weekly, Ravi. Sanjay Narula ji says if you take monthly expiry, then 80, yeah. तो फिर नरुला जी आप ATR monthly का ले लो. So now is the calculation clear to you all? जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा, आपको 177 रुपया आना है बिकॉज उतना प्रीमियम आप बेच रहे हो. सामने आपने जो बाय किया वो हेज करके रखा है, तो उसमें आप उतना पैसा दे रहे हो, सो 177 रुपया आ रहा है और 79 रुपीज आपने हेज के लिए मार्केट को दे रखा है, तो आपको नेट क्रेडिट कितना हो गया? 98 रुपीज. एवरीबडी क्लियर? और ये स्ट्रेटेजी के लिए मुझे मार्जिन कितना चाहिए? 1,21,416. नाउ लेट्स गो टू द पे ऑफ पार्ट ऑफ इट. मैक्स लॉस इसमें कितना है? 18.57. मैक्स प्रॉफिट कितना? 1.43. राइट. बट ये सब स्ट्रेटेजीज में देखिए आपको एक चीज देखनी है, जो है प्रोबेबिलिटी. राइट. सो 98 लेट्स से multiplied by the lot size which is 20 in Sensex equals to how much? 98 into 20. 1960. Right? See, once I get a probability which is very high, like in the spreads, because we have seen prices closing above weekly ATR is very rare, provided we combine it with trend. जब भी हमें sideways दिखता हो तभी हम iron condor करेंगे. In a trending markets we don't do iron condor. Getting my point? So I'm a firm believer, pick up a strategy as per the market condition. कोई भी strategy हो आप उसको market conditions से ही match करो. Give me a yes or a no if it's clear to you all, friends. Now, इसका अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखो तो आपको इस तरह का दिखता है. Got it? Now, कंबाइंड प्रीमियम चार्ट आप देखते कि आपने सेल किया, तो अगर चार्ट कंबाइंड प्रीमियम नीचे आएगा तो आपको बेनिफिट है. तो देखिए ये स्ट्रेटेजी आज मॉर्निंग में अगर किसी ने की रहती यहाँ पे 104 पे,
तो बीच में 121 भी गया और बाद में 81 गया. तो दैट मीन्स अगर see combined charts you have to see because if it's a credit spread that means if price अगर ग्राफ पे नीचे आ रहा है तो वो आपका प्रॉफिट्स है. गॉट इट. अगर आपको एक्सपायरी तक वेट नहीं करना है तो नाउ लेट्स सी. इसमें हमें दिखा रहा था कि करीब करीब 2000 के आसपास बन रहे. परसेंटेज रिटर्न देख ले वीकली. अगर आप ज्यादा लगते तो और दूर चले जाओ. सो हमें इसमें 2000 का दिखा रहा था रिटर्न्स. इफ यू थिंक इट्स टू हाई रिटर्न्स गो फर्दर अप. 2000 डिवाइडेड बाय द मार्जिन ब्लॉक. ये कैलकुलेटर में मेरी स्क्रीन पे ले आता हूँ. आई विल ब्रिंग इट इन माय स्क्रीन. राइट. सो 2000 डिवाइडेड बाय द मार्जिन ब्लॉक्ड ओवर हियर, which is 1,21,416. So 1,21,500 equals to into 100. So this is giving me a weekly return of 1.6%. It's very aggressive. और ऊपर चले जाओ. Got my point now? This is purposely I did this. When I say go further high, so this leg, which is where we mark this 79,300 should be your selling leg. Now you are getting it? And your hedge leg should be above that. Let's say 79,300. Let's say 80,000 पे चले जाते. These are just we are working. My battery is 26 minutes. Is fine. And the second leg is 74,800. इसको 74,800 लेके जाते. Are you all getting it? और hedge leg को और नीचे ले जाते, which is 74,000. Let me do it for you. Right? Now you see, has your premium reduced? अभी आपका नेट क्रेडिट कितना है? 49 plus 29 30. आप अभी काफी दूर चले गए हो. You have gone too far from the current price. Getting it? So 49 plus 50 is your credit. इतना आपको आना पैसा. 49 85 ले लेता हूँ प्लस 29.90 30 ले लेता हूँ. 50 और 30 70 रुपया. इतना आपको क्रेडिट है, घर पे आएगा. If it closes below that. Fine. Now उसके सामने आपने हेज लिया 25 रुपया देके बाई किया हुआ, वो हेज है आपका. और 16.95 तो 17 रुपया इक्वल्स टू हाउ मच? 25 plus 10 35. Okay, I'm horrible at maths. 25 plus 17 equals to 42. तो आपने 42 रुपीस का हेज दिया. तो फिर नेट क्रेडिट आता आपको घर पे आएगा कितना, और आपने हेज में दे रहे कितना मार्केट को? 70 रुपया घर पे आएगा, माइनस 42 रुपया आप हेज में ले रहे हो, तो 70 माइनस 42. वर्किंग समझ में आ रहा है सबको? 28 रुपीस. 28 मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज विच इज 20. तो घर पे कितना आ रहा है? 28 इंटू 20 इक्वल्स टू 560. अभी देखिए आप स्ट्रेटेजी कर रहे हो ना, तो बाय कॉल बाय पुट वाला रिटर्न मत देखो सर. दिस इज लाइक अ फिक्स्ड इनकम सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो 560 अभी देखते हैं, वो बहुत हाई था. 1.64 अ वीक इज वेरी हाई. आपको वोलेटिलिटी देखनी पड़ेगी. सो इस लेट्स से 560 डिवाइडेड बाय, इसमें मार्जिन कम हो जा रही है. रीजन आई डोंट नो. 76,485. एक सेल किया बाई किया या 76,500 कर ले इक्वल्स टू इनटू 100. So which is coming to 0.73 return a week. Which is it bad, friends? और दूर जाओ. Are you all now getting it? Give me a yes or a no. The further you go, the higher is the probability. As long as a weekly return अगर strategy में कर रहा हूँ weekly पे, and if it's something which is around, let's say 0.25 to 0.50, go as far as that. Instead of 79,800, go further high. Make sure prices are way above the ATR. Now you got it, how to select the strike price. Because in a credit spread, the higher you go, the higher is your probability.
Why? Because of the delta part of it. Everybody give me a yes. And now you see your maximum profit, your maximum reward. But see, these strategies are all about, then you can keep on tweaking over here. Okay. So this is, I'm just showing you the construction part of it. Okay, we have a poll. How have you done credit spreads earlier? देखिए credit spreads है ना fixed income products type है. Credit spreads are not speculative. Got it, everybody? Yeah, only 47% have done. आप इसमें क्या कर सकते हो? मार्जिन पे जीसेक रख सकते हो, लिक्विड 20 ले सकते हो, उसमें आपको 6 से 7% रिटर्न मिल ही रहा है, और यहाँ पे जा रहा हो एडिशनल हो रहा है, तो दोनों मिला के आप करीब एक अच्छा रिटर्न साल का ला सकते हो. दैट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट स्प्रेड. क्रेडिट स्प्रेड जो स्ट्रेटेजीज है हेज वाली, वो स्पेकुलेशन के लिए नहीं है. दैट इज जस्ट टू मेक श्योर its returns are any between around 2%. Anything more than 2 is speculative in nature. So we are done with what we have. Iron Condor. Iron Condor clear, everybody? If you have any questions, please let me know. I'll answer all your questions. Anand, brokerage will be very less. Na? Take the 999 plan. Na? Unlimited brokerage of the month. Keep on doing strategies. That's why Stocko Incred Money is of a great help to traders. Anand. Right? So if anybody has any question, please let me know. Iron Condor में करते क्या? It's a combination of bear call spread and a bull put spread. जो रेंज आपको निकालनी है वो वीकली एटीआर से निकालनी है. ऐसे नहीं अंदाज में 1000 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बेच देते कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर. प्लीज ऐसा मत करो. एक कैलकुलेटिव बेस स्ट्राइक प्राइस को आपको बेचना है. एवरीबडी क्लियर? कैन आई मूव नेक्स्ट? Yeah, thank you, sir. Yeah, if you want any strategies to be covered, please let me know. I'll do that. So I've corrected myself on the Batman side. It's if it's sell one lot, then the credit is sorry, buy one lot, then the credit is sell 2 lots. Yeah, Deepak ji, thanks. Have a nice day, everybody. Thank you, sir.